Now let us talk about the Ayurvedic pharmacopoeia. Ayurvedic pharmacopoeia. Ayurveda is a word which is derived from two Latin words, that is, Ayur means life and Veda means knowledge. The Lord Brahma created Ayurveda along with the creation of mankind and universe. Ayur is a holistic system of healing which evolved among Brahmin sages of ancient India from 3000 to 5000 years ago. In Ayurvedic pharmacopoeia, Ayurveda written in ancient India contains Padartha Vigyan or the knowledge of raw material. So this is the basic information to the medical or medicinal preparation. Now API monograph format. Here in this monograph, first of all the title is given in the Sanskrit language, and second one is biological source and geographical source. मतलब पर्टिकुलर ड्रग कौन से प्लांट से डिराइव किया है एंड उसका जियोग्राफिकल लोकेशन क्या है, ये इंफॉर्मेशन दिया जाता है. आफ्टर दैट सिनोनिम referenced in English and Urdu language. After that description is given and identity, purity and strength is also given. Physiological property of the particular drug, TLC, and constituent, which constituent is present in the particular type of drug, their properties, their action, important formulation and their therapeutic uses and doses for compound formulation. So this is all information about Ayurvedic pharmacopoeia, and this is the overall monograph format of the Ayurvedic pharmacopoeia. Now significance of the Indian pharmacopoeia. It promotes rational use of generic medicines by publishing National Formulary of India. It prescribes standards for identity, purity and strength of the drug. तो पर्टिकुलर ड्रग को आइडेंटिफाई किया जाता है, उसको प्यूरिफाई करके उसका स्ट्रेंथ कितना है ये देखते हैं. नाउ इट ऑल्सो प्रोवाइड्स इंडियन फार्माकोपिया रेफरेंस सब्सटेंसेस विच एक्ट एज अ fingerprint for identification of drug for its purity. Indian pharmacopoeia standards are authoritative in nature. Then fifth one is Indian pharmacopoeia contains collection of procedures for analysis and specification of the particular drug. So here the number of steps are given in the Indian pharmacopoeia analysis. The details of each pharmaceutical drugs are mentioned in the pharmacopoeia as a monograph. तो हम monograph किसको बोलते हैं, जब पर्टिकुलर ड्रग का पूरा इंफॉर्मेशन जब बुक में दिया जाता है तो पूरे इंफॉर्मेशन को हम बोलते हैं मोनोग्राफ. Now pharmacopoeial standards are publicly available document that provide independent check about the quality of product. Indian Herbal Pharmacopoeia is a widely used monograph. It includes latest scientific data on medicinal plants, whereas Ayurvedic Pharmacopoeia is a book containing list of drugs, their formulae, taste, purity and other related information. Now let us start with the new topic, that is study of secondary metabolites. अभी हमने देखा फार्माकोपिया, उसके टाइप्स क्या है, उसका फॉर्मेट क्या है, ये हमने स्टडी किया. अभी हम देखेंगे स्टडी ऑफ सेकेंडरी मेटाबोलाइट. The secondary metabolites are defined as small organic molecule produced by an organism that are not essential for their growth, development and reproduction. ठीक है, तो सेकेंडरी मेटाबोलाइट मतलब क्या होता है, जो प्लांट रिसोर्स होता है उससे हम जो केमिकल कंस्टिट्यूएंट निकालते हैं, दैट केमिकल कंस्टिट्यूएंट विच इज यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द पर्टिकुलर ड्रग, एंड दैट इज नोन एज अ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स. Now the metabolites is of a two type. दो टाइप्स के मेटाबोलाइट्स होते हैं, that is प्राइमरी मेटाबोलाइट्स एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स. ये दो टाइप होते हैं. ठीक है, प्राइमरी मेटाबोलाइट्स मतलब क्या है, देखो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच हैज
small molecular weight and it is present in the living tissue. For example, sugars, amino acids, fatty acids and glycerols. ठीक है. Now second one, that is secondary metabolites. Here it consists of analysis of the plant. Fungal and microbial cell contains presence of thousands of compounds other than primary metabolites. These are called as secondary metabolites, and the example is alkaloids, flavonoids, rubber and essential oil. So what is the difference between primary and secondary metabolites? The primary metabolites का जो molecular weight होता है वो small होता है, and the secondary metabolites का molecular weight जो है वो high होता है. So here the difference is the small and high molecular weight. And here the primary metabolites are present in the living tissue and secondary metabolites is present in the fungal and microbial cells. That is the second difference between the primary and secondary metabolites. अभी देखते हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स क्या क्या है. पिगमेंट्स में है कैरोटीनॉइड इज अ टाइप ऑफ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स. देन अल्कलॉइड दैट इज मॉर्फिन, टर्पेनॉइड्स दैट इज मोनोटर्पेन्स, essential oil, lemongrass oil is a type of essential oil. Then toxins में है ricin, lectins में है concavalin A, drugs में है curcumin is also type of drug which is a type of secondary metabolite, and polymeric substances that is rubber and cellulose. Okay, so these all are secondary metabolites which is derived from the natural resources. Now, types of secondary metabolites. There are three types of secondary metabolites, that is isoprenoids. Second one is nitrogen containing secondary metabolites, and third one is phenolic compounds. Okay, तो isoprenoids में देखो, isoprenoids is a lipid like lipophilic compounds. कैसा होता है? लिपिड लाइक एंड लिपोफिलिक. एंड द नाइट्रोजन कंटेनिंग सेकेंडरी मेटाबोलाइट, हियर द सिंथेसिस ऑकर्स इन द प्लांट फ्रॉम द अमाइनो एसिड. एंड फेनोलिक कंपाउंड्स जो होते हैं वो एरोमेटिक होते हैं ऑलवेज. तो तीनों में डिफरेंस क्या है देखते हैं अभी. जब आइसोप्रेनॉइड जो है, आइसोप्रेनॉइड टाइप ऑफ सेकेंडरी मेटाबोलाइट में सिंथेसिस जो होता है प्लांट में वो होता है फ्रॉम द एसिटाइल कोएंजाइम थ्रू द म्यूकोलोनिक पाथवे. एंड